which is placed on a high pedestal representing a stupa. Our national emblem signifies world peace and unity. The military band standing at the national anthem will play the national anthem on the arrival and departure of the President of India. The combined military band of 1 EME Center Secunderabad and the Army Air Defence Center is led by Subedar Chinna Durai K. They will be playing the national anthem and the cavalry brigade. और अब राष्ट्र शुचिता के संरक्षक, भारत माता के उपासक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो रहा है। The motorcade of the Honourable Prime Minister has arrived. It's a bright, clear day, befitting the occasion of the 70th. जन जन में आभार की भावना माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक बन गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर हृदय में देशभक्ति की प्रचंड भावना जगाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। The Prime Minister Shri Narendra Modi being received by the Defence Minister. The Defence Minister then presents the Chief of Defence Staff, followed by the 3 Service Chiefs and the Defence Secretary. माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतीयों की आशा हैं, ऊर्जा है, परम विश्वास है। चुनौती के दौर में भी ये देश पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि आप देश को संभाल रहे हैं। At this point of time, ladies and gentlemen, the President of India, Shri Ram Nath Kovind, will arrive shortly, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-coloured mounts. Raised in 1773, the President's bodyguard is the oldest and the senior-most regiment of the Indian Army. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का शुभागमन। Ladies and gentlemen, Shri Ram Nath Kovind, the President of India, has arrived. हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। The President of India being received by the Prime Minister Shri Narendra Modi. Prime Minister Defence Minister Shri Rajnath Singh. बजेगी 2233 की बैटरी के लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता, सेना मेडल की कमान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर में नायब सूबेदार अनिल चंद। The
President of India moving up the steps of Saloti Dare, escorted by the two ADCs, Major Gopal Singh Punia and Lieutenant Commander Paras Singh. Following close behind are the Prime Minister, the Defence Minister, the Chief of Defence Staff and three service chiefs including the Defence Secretary. आज की परेड में भारतीय सेना के अधिकारी मेजर स्वामीनंदन ध्वजारोहण में सहायता करेंगे। The 21-gun salute will be given by 2233 Ceremonial Battery under command of Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta, Sena Medal and Bar. The gun position officer is Nab Subedar Anand Shah. The flag will be unfurled by Major Swaminathan of the Indian Army. The Commandant President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute, which will be accompanied by the unfurling of the national flag and the 21-gun salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. Those in uniform are requested. सलामी मानो 21वीं सदी को भारत के नाम करने की गर्जना हो। जागा हुआ भारत है जो आत्मनिर्भर है, स्वाभिमानी है, जो दुश्मन को चुनौती का जवाब देना जानता है, अपनी सुरक्षा को दुरुस्त करना चाहता है, अमन के रास्ते पर चलना चाहता है। As the great commander, along with the various contingents, gradually approaches the Saloti Dare, we realize that India, a nation of 1 billion people and a nation for 1 billion reasons, and in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. देख रही है दुनिया तुम्हें उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। Ladies and gentlemen, look towards Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, you shall see the first formation flying in, consisting of 5 B-17 D5 helicopters of 115 helicopter units. The helicopters are flying in a wine glass formation, carrying the national ensign. उत्साह और उत्सव भावना की उमंग है आज राजपथ पर, जमीन से लेकर आसमान तक। Today we salute our beloved tricolour and pay tribute to all the freedom fighters and martyrs whose efforts secured our independence. Today is also an auspicious day wherein we rededicate ourselves to the progress and prosperity of our nation, to the welfare of all people and to the unity and integrity of our country. Followed by Wing Commander Mayank Paliwal trooping the Indian Army flag, Wing Commander Dabran trooping the Indian Navy flag, Wing Commander Kunal trooping the